So Bhargav sir is just joining. उन्होंने अभी कॉल करके कहा है. Okay, he has joined, sir. Okay. Yes, he has joined. Yeah, hello. हेलो. Yeah, hi. नमस्ते भैया जी. नमस्ते निमा सर. हाँ नमस्ते. Okay, sir. सर शुड वी स्टार्ट क्योंकि सर ने ज्वाइन कर लिया है और ये एक स्पेसिफिक आज एक डिस्कशन है सर. जी जी. सो आर लेट मी स्टार्ट सर. यस. So dear students and most importantly respected Shri Asit Nima ji, respected Dr. Arpan Bharadwaj ji, principal of the college. Today ये जो आज का अभी जो मीट हम कर रहे हैं ये एक बहुत स्पेसिफिक पर्पस को लेकर के और एक बहुत स्पेसिफिक मीट है. नीमा सर से हम पहले पिछले 2020 का जो पैंडेमिक वाला हमारा साल था उसमें हमने नीमा सर के जो लेक्चर्स हैं उसमें सुने थे और उसमें हमने सुना था कि नीमा सर का एक बहुत ही जो उनका टेक है एनवायरनमेंट को लेकर के और जो उनकी चिंता है एनवायरनमेंट को लेकर के वो उनके लेक्चर से स्पष्ट नजर आती है. नीमा सर एक स्पिरिचुअल व्यक्तित्व के धनी और उसके साथ ही पर्यावरण के प्रति अपनी वो जो उनका जो स्पिरिचुअल भाव है उसको पर्यावरण के प्रति समर्पित कर देने वाले एक व्यक्तित्व है. ये हमारे बच्चे अभी आपसे परिचित होंगे सर. पर प्रिंसिपल सर आज एक मीटिंग में हैं और बहुत ही कम समय उनके पास है उस मीटिंग के बीच में से. तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इनवाइट यू दैट यू प्लीज वेलकम ऑफिशियली नीमा सर ऑन दिस प्लेटफॉर्म. Thank you much, Dr. Kalpana Singh. Respected Nima sir, respected Dr. Kalpana Singh and सारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स जो जुड़े हुए हैं आप सभी का स्वागत करता हूं. और बहुत छोटे से रिक्वेस्ट पर नीमा सर ने हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और टाइम देना स्वीकार किया क्योंकि हम लोग एक हैकाथॉन में सम्मिलित होना चाहते हैं और उसमें बेसिकली अटल इंक्यूबेशन मिशन जो है उसके साथ उसका इनोवेशन काउंसिल डेनमार्क इनोवेशन काउंसिल के साथ में कुछ वाटर सॉल्यूशंस को लेकर के हम लोग बात करना चाहते हैं. तो मुझे चूंकि पता है कि नेमा साहब का इसमें एक्सपर्टाइज है और हमारे बच्चों का हैंड होल्डिंग करने का मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि इफ यू एनलाइटन समहाउ रिगार्डिंग सम थिंग्स तो उससे हमारे बच्चों को एक सोच मिलेगी, एक सोचने का तरीका मिलेगा कि वो क्या कर सकते हैं और किस प्रकार से कर सकते हैं. तो अभी तो मैं नहीं इस बारे में कुछ कह पाऊंगा कि हम लोग कितना आगे तक बढ़ पाएंगे, लेकिन निश्चित एक कदम तो आगे बढ़ेंगे. तो एक एक कदम करके भी अगर आगे बढ़ेंगे तो मंजिल तक हम लोग पहुंच जाएंगे, ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है. और उसमें जब आप मंजिलों को चढ़ते हैं तो आपको शक्ति की आवश्यकता होती है, ईश्वर की कृपा की आवश्यकता होती है. और ईश्वर की कृपा का जो देखिए ऐसे सर पहले ही मुस्कुरा रहे हैं मेरी बात सुन करके. अभी तो मैंने कहा नहीं कि ईश्वर की कृपा का स्वरूप वे है. एक व्यक्ति जो आईईएस की नौकरी छोड़ करके झाबुआ जैसी छोटी जगह से इसने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की हो, वो पहले बार में ही आईएएस में सेलेक्ट हो जाए, आईआईटी में पढ़ाई करे, अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन करे, विदेशों में अध्ययन करे और सेवा को एक कर नौकरी को एक कर सेवा के क्षेत्र में चला जाए और प्रभुमय हो जाए. बल्कि प्रभु उनके अंदर आ गए. मैं तो ये कहता हूँ वो प्रभु में नहीं समा गए, प्रभु उनमें समा गए. ऐसी साधना वे कर रहे हैं. मैं निजी बातों को नहीं करना चाहिए, मैं जानता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर, लेकिन सच यही है जो मैं कह रहा हूँ. लेकिन ऐसा करते समय सामान्य तौर पर अन्य जो व्यक्ति होते हैं वो संसार से थोड़ा विलग हो जाते हैं, विमुख हो जाते हैं. लेकिन नेमा साहब के साथ ये बात नहीं लागू हुई है क्योंकि उनका पर्यावरण से सरोकार उतना ही है जितना किसी भी हम जैसे सामान्य व्यक्ति का है. वे इतने स्पिरिचुअल हाइट पर होकर के भी आज कनाडा के साथ में वाटर सॉल्यूशंस पर काम कर रहे हैं. जब मैंने कल उनसे रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या उज्जैन में कुंड है, कुंड पर हम लोग कुछ काम कर सकते हैं, स्टेगनेंट वाटर पर में हम लोग कुछ काम कर सकते हैं. तो मैंने बताया सर उज्जैन तो सप्त सागर 7 कुंड है यहाँ पर जो कि उज्जैन की शान है और उज्जैन की पहचान है. तो उन कुंडों में से अगर आज ही आया है कि गोवर्धन सागर को काम हाथ में लिया और मंत्री महोदय, विधायक महोदय और सारे साधु संत और सारे राजनीतिक दलों के लोग पहुंचे, उन्होंने गोवर्धन सागर की सफाई शुरू की. तो उज्जैन के 7 सागर हैं जो कि मृत प्राय है. उसमें जेसीबी से जब जलकुंडी उखाड़ी तब दिखा कि उसमें पानी भी है.
नहीं तो वहां पानी दिखना बंद हो गया था। तो ऐसे सागर जिनको हम सागर कहते हैं, उनकी महत्ता सागर के समान है, लेकिन उनकी दशा जो मैंने आपको बताया कि जब जेसीबी से हरे पत्ते हटाए गए तब वहां पानी भी ऐसा दिखना शुरू हुआ। तो कितना काम यहाँ किया जा सकता है उज्जैन का नागरिक होने के नाते हमारा उत्तरदायित्व क्या है, जो पौराणिक के महत्व के स्थान है उनको हम किस प्रकार से सुधार सकते हैं, और उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। तो जब मैंने थोड़ा सा असित सर को रिक्वेस्ट किया था कि सर यहाँ की स्थिति है, बोला अरे ये तो बहुत अच्छा है और यहाँ तो बहुत काम हो सकता है, हम लोग उस काम को जरूर करेंगे। तो जो बात मैं आपसे कह रहा था कि जो प्रभु की कृपा है वो कुछ इस प्रकार से उन्होंने आत्मसात की है कि उसके साथ साथ वे अपने दायित्वों को, सांसारिक लाभों को नहीं, सांसारिक दायित्वों को निभाने में भी उतने ही इच्छुक हैं उसके जितना कि हम लोग इच्छुक हैं। तो मैं स्वागत करता हूं आदरणीय श्री असित नेमा जी का, जिनका कि सानिध्य हमको मिल पाता है। और हम रिक्वेस्ट करेंगे, एक हमने ग्रीन ऑडिट के लिए आपसे रिक्वेस्ट किया था और अभी हम लोग उस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। रियल ग्रीन ऑडिट हमने ग्रीन ऑडिट किया है पिछले सालों में, पर मुझे पता है कि वो आपको मैं दिखाऊंगा तो आप की नाराजगी मुझे झेलना पड़ेगी, तो मुझे वो आपको मैं नहीं दिखाऊंगा। वो उसको हम अच्छा बना करके आपके मार्गदर्शन में बना करके उसको हम लोग कुछ बेहतर करेंगे। क्योंकि हर 2 साल में ऑडिट करना चाहिए, तो वो 2 साल हमारे निकल गए हैं 19, 20, 21 में। सो विल बी अगेन गोइंग फॉर ग्रीन ऑडिट विद योर गाइडेंस एंड हेल्प एंड इंस्पिरेशन। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ। और बच्चे, अगर आपको उचित लगे, इनमें से किसी बच्चे का आप हाथ थामे सर, ये बहुत बड़ा दायित्व तो हम लोगों के ऊपर है। बहुत सारे बच्चे हैं जो बड़ी आशाओं को लेकर के इस कॉलेज में आते हैं। इनकी आंखों में जो आशाओं के दीप हैं वो हमको बुझने नहीं देना चाहिए, मुझे लगता है। और उसमें आज आप स्वयं किस स्नेहक भर के, किस स्नेहक बनकर के उपस्थित हुए हैं उस दीप को रोशनी देने के लिए। आपका कोटिशा आभार। मैं बैठक में हूँ लेकिन मैं आपको सुनूंगा, क्योंकि बैठक भी चल रही है, लेकिन आपको सुनने का अवसर मैं नहीं चूक सकता हूँ। तो मैं यहीं पर हूँ, आपके साथ हूँ, और इस अवसर का लाभ मैं गंवा नहीं सकता। तो एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं डॉक्टर कल्पना सिंह को वापस आगे प्रोग्राम चालू रखने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। डॉक्टर कल्पना सिंह। थैंक यू डॉक्टर कल्पना सिंह। थैंक यू सर। आज हम ये मैं बच्चों को सुबह एक मीट के थ्रू हम ब्रीफ कर चुके हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी दैट कॉलेज इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन अटल इनोवेशन मिशन, हैज लॉन्च्ड AIM ICDK 2.0 version, and this is a water innovation challenge, and this will be there in partnership with Innovation Center Denmark, Embassy of Denmark, and Denmark Technical University DTU. This event is a part of Greater Indo-Danish Bilateral Green Strategic Partnership, and here the ministry, that is Ministry of Education through IIC, Institutional Innovation Council, they are asking us and they are inspiring us to that if we have a startup or student team or such type of players in our institutions or in our networks which have solutions to the water problems of India, then we should it's our call and we should go there. एंड तो इसी को लेकर के आज हम यहाँ हमारे साथ नीमा सर हैं, जहाँ पर कुछ उन मुद्दों की बात वो करेंगे और वो हमको बताएंगे कि कैसे हम इस इनोवेशन चैलेंज में आगे जा सकते हैं। जो गाइडिंग एरियाज जो मिनिस्ट्री ने तय किए हैं उसमें से एक एरिया वाटर सोर्स मैपिंग का है, मॉनिटरिंग एंड सस्टेनेबिलिटी, सेफ एंड सस्टेनेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का है, एंड ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज का है, and there are many more other areas too. So I would just invite Dr. Shri Asit Nema ji to guide these students on the issues कि हम इनमें से किस इशू पर सब काम कर सकते हैं और इनमें से ये बच्चे किस इशू को आगे लेकर के जा सकते हैं। आई होप सर ने आपके साथ में ये डॉक्यूमेंट शेयर किया है, अदरवाइज मैं इसको पूरा पढ़ नहीं सकती हूँ। ये 3rd तक मैंने पढ़ लिया था। 4th इसका जो एक्सेस है वो प्रेडिक्शन, फोरकास्टिंग एंड मैनेजमेंट है। 5th एक्सेस इज अबाउट अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग है, एंड देन देयर इज एन एक्सेस ऑन बिग डाटा एक्विजिशन, डिजिटाइजेशन एंड वाटर मैनेजमेंट सॉल्यूशंस है, एंड देन देयर इज अ 7th एक्सेस। बेटे आप में से किसका माइक ऑन है? किसी का माइक ऑन?
Then there is a seventh axis, a multi-sensor device development axis भी है इसमें, that makes the use of emerging technologies such as drones, robotics that can float in water, fly in air, navigate through cultivated lands, with an ability to make two-way communication with data command center. So these are the 7 areas and axes which are chalked out by the Ministry of Education through Innovation Institutional Innovation Council टू वर्क अपॉन. और इसमें से जिस भी एरिया में ये स्टूडेंट्स जैसा हमको नीमा सर गाइड करेंगे, इसमें से जिस भी एरिया को ठीक समझा जाए उसमें ये बच्चे आगे सर आपके मार्गदर्शन में काम करने को तैयार रहेंगे एंड दे वुड लाइक टू वर्क सर. दिस इज अ टीम ऑफ 7 स्टूडेंट्स सर. ये 7 स्टूडेंट्स रजिस्टर करेंगे एज अ टीम एंड देन दे विल गो अहेड. सो ओवर टू यू सर. एक मिनट डॉक्टर सिंह, मैं आदरणीय नीमा सर से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जस्ट बात करते हुए मुझे ख्याल आया कि क्या सर आप हमारे इंस्टीट्यूट को, यू और योर ऑर्गेनाइजेशन, कैन यू गिव अस मेंटरशिप? हमको जो इको रेस्टोरेशन प्रैक्टिसेस हैं, जो इकोलॉजिकल इश्यूज हैं, बिकॉज नैक में भी जब हम लोग गए थे तो इट वाज वन ऑफ आवर बेस्ट प्रैक्टिसेस इको रेस्टोरेशन. वी शोड कि ये हमारा एक अच्छा प्रैक्टिस है, लेकिन इसको हम लोग अभी हम हमारे तरीके से कर रहे थे, पानी बचा रहे थे, बिजली बना रहे थे या पौधे लगा रहे थे, लेकिन ये शायद बहुत स्थूल रूप है इको रेस्टोरेशन का. आप अगर हमको गाइड करेंगे, कोई स्ट्रेटेजिक प्लान अगर आप हमको बनाकर देंगे आगे 5 सालों में हमको इस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, तो इसको आप कंसल्टेंसी कहेंगे या मेंटरशिप कहेंगे, या मैं इसके बारे में कोई आर्थिक पक्ष पर अभी कोई बात नहीं कर रहा हूँ, आर्थिक पक्ष पर आप बात करें हमसे. मैं चाहूंगा कि आप आदेश करें. हम एक शासकीय संस्थान होने के नाते हम लोग क्या कर सकेंगे वो हम लोग अवश्य करने का प्रयत्न करेंगे. लेकिन अगर ऐसा भी कुछ संभव है कि एक शैक्षणिक संस्थान किस प्रकार से अपने लोकल एरिया को, अपने जब हमने बात की कि उज्जैन में 7 सागर है जिनकी दशा को सुधारे जाने की जरूरत है, तो अगर ऐसा कोई काम हम हाथ में ले लेते हैं, 7 में से एक ही को ले ले, 1 साल में एक को करेंगे तो 4 सालों में 4 को हम कर पाएंगे, तो या वहाँ काम शुरू करेंगे या वहाँ हम लोग कुछ करेंगे. तो आप अगर ऐसा मेंटरशिप भी कर सकते हो, आप हमारे को ऐसा कंसल्टेंसी दे सकते हो, आप हमारा एज एन इंस्टीट्यूट, ये तो आज का प्रोग्राम तो एक अलग है, लेकिन हम एक स्ट्रेटेजिक प्लान बना करके उज्जैन के लिए आगे बढ़ सकते हैं अगर साइंस कॉलेज, तो वो शायद एक सचमुच ही समाज के लिए हमारा योगदान होगा. और उसके लिए आप जैसा हमको आदेश कहेंगे, जो आपको निर्देश होगा, हम उसका पालन करने का प्रयत्न करेंगे. तो आप अपनी बात कह करके भी बच्चों से इसके विषय में विचार करके भी हमें कृपया बताइएगा कि क्या हम लोग इस दिशा में भी आप पर निर्भर कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. Yeah, so thank you very much, Dr. Bharadwaj and Dr. Kalpana Singh, for your kind introduction, and I'm honored. I feel honored and humbled. So thank you again also for the opportunity to engage with your students. And so first thing is we will talk about this hackathon thing quickly. And the second point, what Dr. Bharadwaj said, that so we will talk separately about it because I have to run for some other meeting. But that's a good thing that both the things get combined. So coming quickly to the theme of today's meeting, let me share. Can I share? Yeah, I think yes. I can share. Yeah. Yes, sir. You can, sir. I can share. So I'll just display the message which came. This one is a water source mapping, monitoring, yes, and sustainability. Okay, for quality and quantity point of view. Yes. So that is one thing which which is very relevant from Ujjain point of view, as Dr. Bharadwaj explained that there are 7 ponds or 7 sacred ponds, and they are in a degraded bad situation. So I think let's quickly dwell on that. Okay, quickly dwell on that because the other subjects are a bit complicated and requires a significant technology support, technology backup, technology background, and maybe more investment and all. But this one is like what the students with their current background and the local situation they can do. So basically, water source mapping, meaning that you take the case of Ujjain and identify the various sources of water which are available.
for public supply, for industrial supply, and all that. So you can identify which are the different uh, like broad consumers. Let's say domestic supply is one, so where the water is coming from, and then for industries where the water is coming from, for institutions where the water is coming from. So whether you are using only surface water, Narmada water, Shipra water, and then groundwater and so on. So you can identify across the city which are the various major sources of water supply, and then slowly zoom on to these water कुंड जो सात सप्त सागर बताए गए हैं और क्षिप्रा नदी बताई गई है। तो क्षिप्रा का अपना एक महत्व है, कुंभ उसी के ऊपर होता है, तो उसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं और उसके ऊपर पूरा डिटेल कर सकते हैं। मुझे जानकारी है कि पिछली बार जो कुंभ हुआ था तो उसके लिए कहीं बड़ी दूर से पानी लाके और क्षिप्रा में डाला गया था, नहीं तो क्षिप्रा का जो फ्लो है बहुत कम हो गया है। एंड ऑल्सो देयर इज वाटर क्वालिटी इश्यू. So you can identify all these sources and then quantify with the help of public health engineering department जो PhD है, which is or municipal corporation, whoever is doing whoever is responsible for supplying water to the city. So in consultation with them identify कि किस जगह से कितना पानी आ रहा है ना, million, we talk in terms of million liters per day or cubic meters per day. So you will then be able to quantify कि किस जगह से कितना पानी और कौन कौन सी डिमांड क्या क्या हो रही है, टोटल डिमांड कितनी है, एंड देन which source is meeting how much demand, like that. रिवर से कितना आ रहा है, ग्राउंड वाटर से कितना आ रहा है, and all. And then so you develop an inventory of all the sources, and then do an estimate of the quantity of water which is being supplied from these sources, and then identify whether they are being exploited, whether the groundwater is being exploited beyond sustainability, how much the groundwater is able to do. So you can talk to MP groundwater department, they would be having an office there, I'm sure. So they are the geohydrologist, or maybe if you have a hydrogeologist in your college or a geology professor with some hydrology background can help, or you go and talk to, as I said, MP groundwater survey department. There they will have a trained professional hydrogeologist. So that is one. I don't know what is the depth of groundwater in Ujjain and what is the condition of groundwater, but I understand in many parts of Madhya Pradesh groundwater table had gone down significantly. So you can dwell on that. You can study surface water, and then you can study groundwater, and then come to these कुंड, जो सप्त सागर हैं, तो उसके ऊपर एक अच्छा सा पूरा उनको जो है मैपिंग कीजिए, उनकी जो है पूरा फोटोग्राफ्स बनाइए और डायमेंशन निकालिए, उनका नक्शा पूरा बनाइए, और करंट कंडीशन क्या है उसके ऊपर राइटअप लिखिए कि गंदा पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, और सरफेस वाटर बारिश का पानी आता है नहीं आता है, और जैसा बताया डॉक्टर भार्गव ने कि भाई उसमें जल कुंभ भी लगी हुई है, एंड सो ऑन. सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, क्लीनिंग ऑफ, whether municipal corporation is doing its responsibility or not, या 10 साल में एक बार या 5 साल में एक बार सफाई हो रही है. तो what are the issues? You bring out those issues, कि why the condition of these ponds is in such a bad shape, why, who is neglecting, who is not performing its job, not performing its duty, and what role the community can play. So then there is another topic like community awareness creation and all participation. So you can blend there that, okay, there are a number of institutions in the city, social organizations and NGOs and voluntary organizations. So you can take their support, whether they will be willing to help if you were to do something for rejuvenation of these Saptakund.
So who will provide the funding? You can go and talk to the collector and municipal commissioner and municipal corporation mayor and so on, and say that, yeah, this is one such thing. We should take pride in Ujjain's these Saptakunda, and how to improve, how to revive, and so identify those things, do some water quality testing. सब जगह के फिर जो है, तो now from quality, from quantity you come to quality. तो कुछ सिलेक्टेड जगहों के, या जहाँ पे भी जैसा भी आपका रिसोर्सेज है, बजट है, उस हिसाब से सब जगह के वाटर सैंपल इकट्ठे करो, उनका क्वालिटी एनालिसिस करवाओ. बेसिकली यू कैन आइडेंटिफाई फ्यू की पैरामीटर्स, है ना. वेदर इट इज, इफ इट इज फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट ऑफ व्यू, देन यू लुक फॉर ड्रिंकिंग वाटर पैरामीटर्स, and if it is from aesthetics point of view, then you look at BOD, COD, color, and turbidity, and so on. So those parameters can be identified. ड्रिंकिंग वाटर का है तो उसमें देखना पड़ेगा फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक. मध्य प्रदेश में तो आर्सेनिक का इशू नहीं है, पर फ्लोराइड का है. और जो ड्रिंकिंग वाटर पैरामीटर्स होते हैं वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के उससे मिल जाएंगे, या फिर CPHEO होता है, सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल एंड इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का, उनकी वेबसाइट पे भी होता है. या फिर आपका PhD के डिपार्टमेंट वाले ही बता देंगे कि ओके दीज आर द पैरामीटर्स एंड सो ऑन. और अदरवाइज यू, या सो दैट्स वन थिंग. And then get them analyzed either in your own laboratory or in a certified accredited NABL accredited laboratory for these parameters. So you will get a good idea ki okay, these are the sources and these are the quantities and these are the qualities. उनको अब एक मैप पे कर लीजिए, तो उसका इन्वेंट्री हो जाएगी, टेबुलेशन हो जाएगा, और क्वालिटी आ जाएगी, क्वांटिटी आ जाएगी. तो यू विल बी एबल टू देन आइडेंटिफाई कि कौन से सोर्स में क्या इश्यूज हैं. एक्सक्यूज मी. And whether Ujjain is meeting its demand properly or not meeting properly, and where else they can look for more sources, or how to strengthen. आपने ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के बारे में सुना ही होगा. तो यू कैन लिंक दीज सप्तकोंडा विद ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग, कि भाई अगर कुंड खराब होंगे तो पानी इकट्ठा नहीं होगा, पानी इकट्ठा नहीं होगा तो रिचार्जिंग नहीं होगी, रिचार्जिंग नहीं होगी तो ग्राउंड वाटर नीचे जाएगा. तो दैट वे यू कैन इंक्लूड व्हाट इज कॉल्ड एज वाटर सिक्योरिटी, कि by keeping the ponds in a good condition, you will be basically doing a great job to the city by doing great groundwater recharging. So you better keep the pond in a good shape, because they are the recharging zone. And then we can talk about how to clean how to keep the ponds in clean condition. Currently, it just happens that I'm working with a company from Canada which brings a special technology for cleaning of the kund. So we are working on a kund for Radha Kund, which is in Govardhan, in near Vrindavan. So Radha Kund and Shyam Kund, where the water quality is bad, but people take आचमन, पीते हैं उसको थोड़ा सा पानी लेके, और उसमें फिर जो है हजारों बैक्टीरिया होते हैं. तो आप बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस भी करवा लेना. I told you physical analysis, chemical analysis, and microbiological or bacteriological analysis of the water sample. So you'll get the whole thing. There are a number of parameters for that. So according to the budget, you can decide. And then link it up with water security for the city. By keeping the ponds in good shape, you are going to have a good area for recharging of the groundwater, and then therefore you will have more water in the tube well and wells. So people will be more secured with their water supply. So like that, I think this is a relevant and local subject. Students can go around and identify the various sources,
do some consultation with the people. That can be another theme. To public consultation is important. Go and talk with, so engage your social scientist if you have a sociology department. So that faculty from that department can be roped in to have public opinion, what the people think about it, whether are they interested in reviving these ponds, and are they concerned about it, what will be their role, what are they willing to come forward and support, are they going to collaborate, like that. So you can do that. You can, as I said, some NGOs, some business organizations, local chamber of commerce, and so on. So you can motivate them कि भैया आपकी ठीक है, Ujjain is a great place, a lot of tourists come, but it is also your responsibility to give back to the society by contributing in such kind of projects. So more tourists will come, and so on. So tying the threads together, bringing various stakeholders, and both from government side, from NGO side, from business side, and so on. So like that, it can be a good overall long-term project. It can be, as Dr. Bharadwaj mentioned, over the next 3, 4, 5 years. So we can look at, like I said, because all these things require money, and the money from government, you don't expect much money. So the money can come, what is now called as crowdfunding. Crowdfunding means local business organizations, local companies, local industries can contribute, and Madhav College can take the lead, and then they will have more confidence that okay, education institute is taking the lead. And so like that, yesterday only I was reading one wonderful project which has been implemented in Bombay, which is called Irla Nala, IRLA Nala, Irla. You can do Google search. So there was one architect who identified that this Nala is such a bad shape, but it can be revived, it can be rejuvenated. So they brought so many stakeholders together: NGO, civil society, municipal corporation, collector, business, and so on. And then they contributed, and many people worked for free, but many people got, they were paid for the expertise and technology and equipment and all that had to be installed. So all that happened, and it has become a beautiful project. Now गंदा नाले के दोनों तरफ उन्होंने अब जो है साइकिल ट्रैक बना दिए हैं, और उसके जो है ना बढ़िया बहुत ही सुंदर गार्डन बना दिया है। तो लोग बाग सवेरे वॉक करने आते हैं, बच्चे वहां पे जो है साइकिल करते हैं, एंड सो ऑन. So it has now, earlier it was such a terrible drain, nobody would like to go there, because you can imagine, जैसे हर शहर में होता है गंदा पानी और गंदगी पड़ी हुई है, उसको अब उन्होंने इतना ब्यूटीफुल बना दिया है. तो इट हैज बिकम एन असेट. इन द बिगनिंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज नॉट रेडी, दे हैड डाउट्स कि वो ये कौन करेगा, कैसे करेगा, ये जो है बहुत ये होगा वो. बट पीपल कंटिन्यूड टू pursue, and they did not give up. So like that, I think this is one idea I thought we can quickly take it forward. Students, you can ask questions from sir. ओके अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं जो आप बहुत जल्दी में पूछ सकते हैं तो पूछिए, क्योंकि सर ने जैसा कहा था कि उन्हें किसी मीटिंग में भी जाना है, तो ही हैज टू रश अप आल्सो. सो इफ यू हैव 1 or 2 क्वेश्चंस यू कैन आस्क हरिडली, अदरवाइज आप मुझे लिख के दे सकते हैं, तो मैं सर से बाद में भी हम पूछ सकते हैं. Okay, so you know what? I just described you some random thoughts. Now, the right approach would be that somebody should take the lead and prepare a concept paper. Okay, 2-3 page concept paper by putting all these ideas together, and then from there, maybe you can download from the Google format for concept paper, or maybe you would already be doing something like that.
So that will be a structured concept paper, or maybe this hackathon proposal also would be giving some links for application form and all. So that will give you an idea, okay, how to structure your concept paper, and then how to structure your detailed proposal. And you can ask them to give extension of the time. अभी 30 तारीख है, 2 दिन है, 1.5 दिन है, आज 28 तो हो गई. तो उससे you can submit an application request that we need more time. That is one possibility. And then develop a detailed proposal as per their requirement, identify the costings and all, कितना खर्चा आएगा and all that, and identify stakeholders. So yeah, first step is developing a good concept note, so that will, like, I mean, you know how it is when you take up a PhD project or an MSc project. So you have a concept paper, what all exactly you want to do and how you will go forward. So like that. Okay, so if you rightly suggested by Nima sir that you must go ahead with the preparation of a concept paper or concept note. So the first thing which I even requested in the morning to you students, that you should just do certain things, certain mandatory things. So one of that has been done by Lokendra. He has created a group email ID with a common password, and he has shared that too. So log in with that and try to just see that how this application process turns on, and then we can just fill up the formats, and then we can ask for everything whatever is there. I think that right now we just have to apply, then they will be giving us a certain window period for maybe for 15 days, maybe for 1 month. In that we have to put up a proposal or something like that. So that can be done. So like, first of all, we have to apply that we are in for this hackathon, that is the letter of intent, and then we can move ahead with whatever time is given to us. In that time, you will be following the whole process flow which has been mentioned to you by Nima sir, that what you can do. And he was talking on the first aspect or the first axis, that how can you go ahead with all these things. ओके, सो अगर आप अभी कुछ नहीं पूछना चाहते तो मैं भारद्वाज सर से रिक्वेस्ट करूंगी. सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, कैन आई आस्क समथिंग इफ यू परमिट मी? डेफिनेटली. Sir, Radhe Radhe. This is Prakriti Sharma. From the side of all of us, there's a certain question which I have on my mind. As you said that we must be starting it off with water source mapping, and it goes on with the channelization of ideas for all the things. Like, we'll be linking up various things that we started from water source mapping. We go for awareness and capacity building programs. Then we go for the treatment and technologies of making how the water can be used in a sustainable development manner. So I just wanted to have one thing, that the technologies we are using, the things which we are using, is a broader prospect of all the three merged together in a single concept. Can we just go for awareness and capacity building program so that we can curtail the first two, that is sourcing and mapping and treatment technologies, and we can directly be going on the awareness capacities and all? Or should we strict source mapping and then elaborate the other tools? Well, actually, the thing is, your focus should be on just one, and which is the first point, which is water. What is it called? Water source mapping, monitoring, and sustainability. That is it. Okay. I brought this awareness thing and all, that will be later on as a part of your study or as a part of your implementation. But right now, your focus is only on point number one, that you will do all the mapping, all the sources which you will identify, develop an inventory, quantify, and develop an understanding of the quality by doing the monitoring, and then talk about sustainability, whether water supply to Jain is sustainable, or is there is a risk
Okay, so water source sustainability and overall citywide water supply sustainability. So that is the first, that is the only theme. Wait a minute, let me share. Yeah. So this is it. This is the only thing we are talking about. Then later on, when you develop the proposal, then we'll say, okay, one small component will be on where is this? This one, awareness capacity building. But my main concern is this, and safe and sustainable distribution and reduction of non-revenue water. This is out of your domain, because this is more for engineering students. Given your background on pure sciences, I think even you don't even worry about these also, because that is again hardcore engineering background. But this is what you can do, you can achieve with your given level of educational qualification, background and experience or exposure. So try to keep it simple and within manageable resources. Okay. Yeah. Thank you so much, sir. Okay, is there any more question? Okay. Sir, Bharadwaj sir, do you want to say something? हाँ, बस यही कि बहुत शुक्रिया देना चाहिए, ये तो कहना ही है मुझे। और जैसे सर ने बताया कि हम लोग इसको, और जैसा आपने बताया कि विल राइट फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट ऑल्सो, वो भी हम लोग आज ही मेल कर देते कि हमको थोड़ा सा समय वो दे, और अगर वो एक्सेप्ट होता है तो हम डिटेल नोट भी बनाकर भेज देंगे। तो हम लोग टाइम लिमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज तो बनाते ही हैं, और जैसा आपने बताया कि पब्लिक पार्टिसिपेशन को उसमें शामिल करना चाहिए, और फिजिकल, केमिकल एंड एज वेल एज बायोलॉजिकल उसके जो एनालिसिस किया जाना चाहिए, उसको करके हम लोग कुंड को लेकर के हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। तो वो दैट विल बिकम वोकल फॉर लोकल एंड ऑफ द नेशन विल बी कवर्ड इन ऑल दोस थिंग्स। तो ऐसा कुछ हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं सर। और जैसा मैंने आपसे दूसरा रिक्वेस्ट किया था, जिसके लिए आपने कहा कि आप उसके बारे में अलग से बात करेंगे, तो हम उस विषय में बात करेंगे कि कैसे हम एज ए साइंस इंस्टीट्यूट कैसे हम रियल साइंस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सिटी को। तो उसके बारे में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारा साथ दीजिएगा। और अब जो देता है वो बड़ा होता है, तो बड़े से मांगा जाता है। तो आप बड़े हैं सही अर्थों में, क्योंकि कृपा भी आप पर है प्रभु की, वैसी कृपा है वैसा ही मन भी, और सब कुछ। अब वो तो अलग बात हो जाती है, बड़ा भावुक हो जाता हूँ आपसे बात करते हुए, क्योंकि कोई इतना निकट का ऐसा मेरा निकट का कोई वैसा नहीं है जैसा आप है। बहुत अद्भुत है आप। और आपने रात को जब मैंने बात की, मैं बताना चाहूंगा मीटिंग में, बच्चे जरूर सीखे और समझे कि सर ने मुझे कहा कि अब मैं आधे घंटे भगवान को सुला रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको फोन करता हूँ। आप देखिए, ये एक इंजीनियर है जो विदेशों में काम करते हैं, और इनकी सेवा भूमि देखिए। ये कृष्ण भगवान को सुलाते हैं रात को आधा घंटे, और कृष्ण के राधा कुंड को, कृष्ण के कुंड को सफाई करते हैं। तो क्या ही अद्भुत संयोग है। और एक ऐसा मनुष्य बनने का प्रयत्न सभी को करना चाहिए, जैसी कृपा आप पर हुई है ऐसी सबको प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना मैं प्रभु से करूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर कल्पना सिंह आगे अपने बात कहें। और मेरा फोन में, जैसा आपने बताया कि मैं एक मीटिंग में आया था, तो हालांकि मैंने मीटिंग को छोड़ करके आपकी बात को सुना, और फिर फोन की बैटरी खत्म होने से मैं इसाक मैडम के फोन से जुड़ गया हूँ, और वो भी मेरे साथ में है और इसमें जुड़ी हुई है। तो नमस्ते सभी को, बहुत बहुत नमस्ते। मैं कंटिन्यूस सुन रही थी और मैं मीटिंग में भी थी, और लेकिन बीच बीच में हम आपकी भी बातें सुनते जा रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा सुन के। और जो टॉपिक है वो तो इतना अच्छा है, अद्भुत टॉपिक है बिल्कुल। और उसके लिए तो जो भी हम साधुवाद आपको दें, और इस तरह की जो चीजें होती हैं वो नॉट इवन बच्चों के लिए, बच्चों को एनकरेज करती हैं आगे बढ़ने के लिए, और कंट्री के लिए तो बहुत ही पॉजिटिव चीज है। हमारे कॉलेज के लिए बहुत अच्छा अवसर है। तो ओवर टू डॉक्टर कल्पना सिंह। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir. Thank you very much for sparing your invaluable time.
आपका जो समय आपने हमें दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार सर. विल मूव फॉरवर्ड एंड विल कम बैक टू यू अगेन आफ्टर वी फॉर्मलाइज समथिंग, आफ्टर वी प्रिपेयर अ कॉन्सेप्ट नोट एंड आफ्टर वी अप्लाई, विल अगेन कम बैक टू यू. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू. नमस्ते. थैंक यू सर. बच्चों, मैं आपसे जरूर बोलना चाहूंगी, हमारे गेस्ट मीटिंग उन्होंने क्लोज कर दिया है, इसलिए कि आप लोग अब अपना आप ऑन कर सकते हैं, वीडियो भी ऑन कर सकते हैं अगर चाहें तो, सो दैट आई कैन सी. ना चाहे तो ना भी करें. आप लोग अपना अप्लाई कब करने वाले हैं ये बताइए मुझे, बिकॉज कौन अप्लाई करने वाला है? लोकेंद्र ने मेल बना दिया है, उसने शेयर कर दिया है. या तो आप कल कॉलेज से इसको अप्लाई करें, या फिर अगर आप कैसे करना चाहते हैं मुझे नहीं पता. कैसे करेंगे बताइए, कुछ सोचा है आपने? क्योंकि जब हम अप्लाई करने जाएंगे तब हमको बहुत सारी चीजें वहां पे अनफोल्ड होंगी. हमको कुछ चीजें नहीं पता है. देयर आर सर्टेन लाइक इंट्रिकेट